Brown bread. Most of it is bad. Pre-workout drinks. No, not required. Performance enhancers की हमको 98% of लोगों को ज़रूरत नहीं है. Millets. Not easy to digest. Protein powders हमारे लिए सही हैं या नहीं है? या सिर्फ ऐसे ही शोषा है? Doesn't work. The worst thing you can do to your body. Do not have cocktails. I did not know that. आप रोटी खा रहे हैं और सब्जी खा रहे हैं. That is the worst thing you can do for your life. आपने 20 कैलोरी हटा दिया. एक चम्मच में 20 कैलोरी तो है. बट आप जो खा रहे हो उसमें तो हो सकता है 1000 कैलोरी हो. Fat burners and these carb cutter capsules. So you're wasting money. So what do you think about that Ozempic? So losing 5 kilos, is it worth cutting off 10 years from your life? People focus on weight too much. सुबह bread, lunch में रोटी, dinner में रोटी is bad. Hi, my name is Nishtha. And I'm Nimisha and welcome to another episode of Jist CheckUp. एंड आज हमारे साथ है न्यूट्रिशनिस्ट एंड ऑथर कविता देवगन और हम बात करेंगे वेट लॉस के बारे में, हेल्दी हैबिट्स के बारे में और ऐसी ढेर सारी चीज़ें जो हमारे डे टू डे लाइफ को इफेक्ट करती हैं. सो वेलकम कविता, वेलकम टू जिस्ट. Thank you so much. Welcome to Jist. Okay, so सबसे पहले we'll start with one basic question जो हमारे दिन भर में चलता रहता है कि what is a balanced diet? So एक balanced diet, एक perfect balanced diet हम अपने लाइफ में कैसे ले सकते हैं, बना सकते हैं बेसिकली? कैसे बना सकते हैं? Yes. बैलेंस डाइट की जो डेफिनेशन होती है वो बड़ी क्लियर है. बैलेंस डाइट का मतलब होता है आपकी डाइट जिसमें सब कुछ जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो सही मात्रा में हो. सो राइट इंग्रेडिएंट्स, राइट फूड इन राइट प्रोपोर्शन. सिंपल सी डेफिनेशन है और उसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है. ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में या ज़्यादा मेजरमेंट्स में मत जाइए बिकॉज वो बहुत स्ट्रेस ऐड करता है. आई हैव सीन, जिसको भी बोलो कि आप प्रोटीन या अपनी कैलोरीज काउंट करना शुरू करो, दैट इज़ वेयर थिंग्स स्टार्ट गोइंग डाउन हिल. सिंपल तरीका है बैलेंस डाइट का बनाने का कि आपकी जो प्लेट है उसमें सब कुछ जो इम्पोर्टेंट है, मैक्रोस, एक ग्रेन जो कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स देता है, एक प्रोटीन का सोर्स, गुड क्वालिटी प्रोटीन का जो आपको कंप्लीट प्रोटीन देता हो, गुड फैट और फाइबर, ये सब का होना ज़रूरी है. और एक थाली को जो हम डिवाइड करते हैं बहुत आसान तरीका है. एक आपकी राउंड थाली है, उसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए. एक पार्ट आपका सारा, हाफ 50% आपके वेजिटेबल्स होने चाहिए जिसमें कुक्ड और रॉ दोनों होना बहुत इंपॉर्टेंट है. और जो बाकी का 50% है उसको आप अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए. एक पार्ट आपका प्रोटीन हो जाए और एक पार्ट आपका गुड फैट हो जाए. बहुत सिंपल है. तो जस्ट इन अ सिंपल मैनर अगर मुझे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर जो मेरी थाली है उसको डिवाइड करना हो तो क्या आइडियल फूड ऑप्शंस हो सकते हैं? आपको हर मील में सारे मैक्रोस खाने चाहिए, पहली बात. अनलेस कि कोई स्पेसिफिकेशन है डॉक्टर की तरफ से कि वेट लॉस करना है या कुछ नहीं खाना है तो वो चीज़ आप उसको कम कर सकते हो. बट अदरवाइज चाहे आपका ब्रेकफास्ट हो, चाहे आपका लंच हो, चाहे आपका डिनर हो, यू हैव टू इंश्योर कि उसमें तीनों कंपोनेंट्स जो इम्पोर्टेंट हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, आपके प्रोटीन और आपके गुड फैट और साथ में फाइबर, जो कि इन तीनों के साथ आ ही जाता है अगर आप करेक्ट फूड्स चूज़ करते हो. इन सब का होना ज़रूरी है. तो आप ब्रेकफास्ट खा रहे हैं तो एक सिंपल सी चीज़ है, आप ब्रेकफास्ट में एक कोई भी अच्छा ग्रेन चूज़ कर सकते हो. तो आप चाहे अगर आप रोटी प्रेफर करते हो तो आप होल व्हीट रोटी ले सकते हो, साथ में सब्जी ले सकते हो. आप सैंडविच बना रहे हो तो सार्डो का, बिकॉज फर्मेंटेड है, उसका टोस्ट बना सकते हो, या सोर्स गुड होल व्हीट ब्रेड उसका बना सकते हो. साथ में एक प्रोटीन सोर्स है तो अगर आप एग्स खाते हो तो एग्स ले लो, नहीं तो चना पनीर खा सकते हो, नहीं तो आप स्प्राउट्स खा सकते हो. ये आपका प्रोटीन आ जाएगा. और साथ में गुड फैट्स के लिए आई यूजुअली सजेस्ट, सबसे आसान तरीका है नट्स ऐड करना. तो या नट्स ऐड कर लिए या सीड्स ऐड कर लिए तो वो कंप्लीट हो जाता है आपका. और अगर आप डेयरी ले सकते हो साथ में तो नथिंग लाइक इट. Okay, when the first thing people go on a diet, they cut out carbs, right? So क्या carbs सही में इतने बुरे होते हैं? कुछ भी बुरा नहीं होता है, कुछ भी बुरा नहीं होता है. ये जो रूल्स है ना, ये बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग रूल्स हैं. इतने फैट डाइट्स आते हैं, चले जाते हैं, घूम फिर के फिर हम वापस इन्हीं रूल्स पे आते हैं. क्यों? बिकॉज दे आर प्रूवन ओवर टाइम. यू नीड एवरीथिंग इन योर बॉडी. कार्ब्स भी बुरे नहीं हैं, गुड फैट्स भी बुरे नहीं हैं, कुछ भी बुरा नहीं है, सिर्फ क्वांटिटी. इंस्टेड ऑफ सेइंग कट ऑफ कार्ब्स, आई यूजुअली टेल पीपल कट डाउन कार्ब्स. थोड़ा सा कम करो, अपनी टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा चेंज करें. कार्ब्स को बहुत ज़्यादा खा रहे थे हम, आई एग्री,
तो वहाँ प्रॉब्लम थी जब हम कि हमारी प्राइमरीली कार्ब बेस्ड डाइट हो जाती है कि हम सिर्फ कार्ब्स खा रहे हैं सुबह शाम दोपहर स्नैक्स में, तो फिर वो एक्सेस हो जाता है. इवन जो हमारे लिए अच्छा होता है वो भी हम ज़्यादा खाते हैं, तो वी विल हैव प्रॉब्लम विद इट, राइट. सो कार्ब इज नॉट द विलन, इट्स द क्वांटिटी. उसको रिमूव करने की जगह आई टेल पीपल जस्ट कट इट डाउन टू साइज, थोड़ा कम कर दो. And what are the best sources of good carbs? गुड कार्ब्स के सोर्सेज सब हैं. फ्रूट्स आपको कार्ब्स देते हैं, विच इज़ अ ब्रिलियंट वे टू गेट इन कार्ब्स बिकॉज फाइबर के साथ आ जाता है आपका कार्ब्स. दूसरा, आपको ग्रेन्स भी कार्ब्स देते हैं. हमको ग्रेन्स तो देते ही हैं सारे कार्ब्स, उसमें आप चूज राइट करिए ना. आप रिफाइंड की जगह होल कार्ब्स होल ग्रेन्स लीजिए, रोटेशन में ग्रेन्स लीजिए, सिर्फ व्हीट पे मत डिपेंड करिए. आप एक दिन मिलेट खाइए, एक दिन किनोआ खाइए, एक दिन राइस भी खाइए, सब कुछ चेंज कर करके खाइए, तो आपको ग्रेन से भी कार्ब्स मिल जाएंगे. देन ऑल्सो पीपल डोंट नो एंड ऑल्सो डोंट थिंक राइट, दाल्स जो हैं हमारी वो हमको प्रोटीन देती हैं, बट दे ऑल्सो गिव अस कार्ब्स. एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं बताऊँ, जो ये कार्ब फ्री डाइट, एक ये बहुत बड़ा वो आता है, एवरी few years or every few months एक नई फैट डाइट आ जाती है in a different form with a different name, right? But उसका स्टोरी यही होता है कि कार्ब्स अपनी डाइट से हटा दो. कोई कहता है फैट बढ़ा दो, कोई कहता है प्रोटीन बढ़ा दो. So have you ever noticed within 2 weeks of a carb free diet, why do people become so sad? Also lethargic. And angry. Yeah. You know, they get restless and they Yeah. get angry, and then they also start feeling sad. And it's not that they are just, feeling sad. Their physiology or their biochemistry is making them sad. There's science behind it. आप जब प्रोटीन खाते हो, आपको ट्रिप्टोफैन मिलता है, which is what goes inside your brain and makes you happy. सेरोटोनिन बढ़ाता है ब्रेन में. तो अगर आप कार्ब्स नहीं खाओगे, तो वो जो ट्रिप्टोफैन है, वो जो बैरियर है, उसको ब्रेक करके ब्रेन में जा ही नहीं पाएगा. So that protein you're having is not helping you. Oh, okay. I did not know that. Exactly. So when you eat carbs, a little bit with the protein that you're having, high protein is good, very good for us, right? तो आप प्रोटीन के साथ थोड़ा सा कार्ब अटैच करोगे. So basically that is going to make sure कि tryptophan from the protein goes to your brain and keeps you happy, and that diet that you're trying to do will be sustainable. Long term आप उसको कर पाओगे, and you will not snap at people, you won't feel angry. This happens. So This happens. basically protein without carbs is useless. Absolutely. Okay, so we're talking about foods जिनको ऐसे bad consider किया जाता है whenever we talk about weight loss journey और nutrition in general. Stereotypes हैं. तो I have a list of few things that I would want to discuss. So पहली चीज़ है milk. So do you think milk is bad or good or? The thing is, dairy is not the villain. This is something this goes against popular opinion, but I do not shy from saying it, that I feel dairy is not the villain. Dairy is an integral part of our diet, especially children. होता ये है when you keep announcing and screaming from rooftop कि dairy is bad, dairy is bad, dairy stop कर दो, तो वो wrong message जाता है और लोग बच्चों को देना भी बंद कर देते हैं. And that is where the problem occurs. That is a growth phase. And we keep saying ये हटा दो. My problem with most people is everyone says ये हटा दो. Nobody gives solutions. Alternatives नहीं बताता है. अगर आप डेयरी हटा रहे हो, so you're removing one complete food जो कि आपको सारे nutrients दे रहा है, हटा दो. I don't have a problem. Everything is indispensable. Nothing is indispensable. आप हटा सकते हो. सबके alternatives होते हैं. But please tell people कि कैल्शियम कवर करने के लिए क्या लें, जो बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें कोलिन होता है, उसमें बहुत, इट्स अ कंप्लीट फूड, इट गिव्स यू सो मेनी न्यूट्रिएंट्स, राइट? कुछ भी आप उसके नेगेटिव्स बोलो, पर उसका पॉजिटिव ये है. तो इफ़ यू वांट टू रिमूव इट, देन यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड एट योर डाइट एंड इंक्लूड दिस होल लिस्ट ऑफ फूड्स, बिकॉज कोई प्लांट मिल्क जो है वो उसका कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं है. I'm not against plant milk. I also like plant milk. I give it and I have it myself. But dairy is not the villain. The problem is with sourcing. That I agree. कि जो normal milk मिल रहा है, that might not be that good for you because of the problems that we know of. कि antibiotics होते हैं, hormones होते हैं, cattle is not taken good care of. So that can cause the problem, but that is a different problem to solve. That doesn't mean that you make the food bad, that you just
ऐसे तो we will not be left with anything to eat. Even palak, for that matter, people say that it's sprayed with pesticides, so you remove that from your diet. People are very worried about the source of, where the fruits are coming from. There's wax in the fruit. You can't keep removing foods. So first we need to understand that you can't brand a food a villain. आप उसका solution ढूंढो जो problem है, but do not try and completely make every food, because बहुत wrong message जाता है in the market, and then people stop having it, and that's a big problem. तो जो lactose intolerant लोग हैं उनके लिए क्या alternatives हो सकते हैं? I'm lactose intolerant. Okay. Yes. So I was not born lactose. Most of us are not born lactose intolerant. होता ये है, again, their milk is not the culprit. The culprit is our gut. Okay. So over the years, because of the toxins, because of the kind of food we are eating, because of the stress, pollution, things not in our control maybe, the gut lining becomes weak, and that enzyme that we need to digest milk, lactase, becomes less. Okay. So when that happens, your body cannot handle milk. So in that condition, of course, you need to avoid it, because eating something that your body is not able to digest will only create toxins. So then, of course, you need to go off dairy. But 90% of people who are lactose intolerant, including me, can handle curd. Oh. Yeah, and small amounts of paneer also, and buttermilk. So everybody is different, because everybody's gut state is different. I might be this bad, you might be that bad, So you need to figure out what stage are you at, and if you can handle curd and buttermilk, please include that in your diet for sure. And there are enough alternatives अगर आप बिल्कुल नहीं handle कर सकते. So calcium के लिए sesame seeds, अंजीर. There are vegetables that can give you some calcium. Tofu can give you calcium. Tempeh can give you calcium. So protein is another important thing that gets shortchanged, because vegetarians की diet में milk is not just a source of calcium. It's also a source of protein. तो अगर आप milk भी हटा देते हो from the equation, as it is you're not eating non-veg food, your protein content just nosedives, which can be brought up, but it needs work. You need to work on your diet. So बहुत alternatives हैं. मिल्क की अगर बात करें तो मार्केट में there's high protein milk, there's skim milk. So do these actually work? No. With milk, I'll tell you what works. You need to source it right, like I mentioned. It is so important to ensure that which is true for everything, which is true for eggs also in today's time. Eggs also are getting very suspect, कि आप कहाँ से ले रहे हो. So you need to source your milk from a place, if you can. I mean, not everything is ideal in the world. Not everyone can afford that also. But if you can, try and source your milk from a place where you're sure your cattle, your cows are taken care of and are graze fed. बस सबसे important ये है. उसके बाद आपका A1, A2 ये सब आता है. पहले सबसे important होता है source, and then if possible A2, because less inflammatory होता है. I'm not saying A1 is bad, but A2 milk जो होता है वो inflammation कम आपकी body में create करता है. But A2, A1 तक जाने से पहले the source is important. Source should be good. तो weight loss में any toned milk पीना अगर आपकी source अच्छी हो is fine. ज़रूरी नहीं आप skim milk पियो. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है. Weight loss में क्या होता है कि आपका जो entire diet है that is important. आप सुबह से लेके शाम तक क्या खा रहे हो. आप toned milk पी रहे हो पर आप 11 बजे चिप्स का पैकेट खा रहे हो तो it is not going to help ना. Yeah. So I would much rather आपको टोन मिल्क पीना पी लो, but it doesn't make a difference. You can manage around any kind of milk. अब आते हैं चीनी पर, sugar. So what do you think about sugar? So eating a little bit of sugar is actually good for us, because in Ayurveda it is very, very clearly mentioned that Madhura, the sweet flavor of the taste, is an essential part of a balanced thali. So Ayurveda doesn't look at a balanced thali from just the perspective of protein, calories and fats. It also looks at it from the textures point of view, that all textures should be there. That is why always there was a small papad. Yeah. To satisfy the crunchy taste. Agar aapka crunchy taste lunch mein satisfy ho gaya, तो you will not crave it at 4. And also different taste. Every thali must
have, according to Ayurveda, a little meetha, a little salt, a little bitter, kadwa also, and a little astringent. So all the 5 tastes need to be there in every Ayurveda thali. So meetha is important, but by meetha I mean 1 laddu, not 5. थोड़ा सा उसी में अगर मैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स स्टीविया इन सब की बात करूं तो आर दे एन ऑल्टरनेटिव और आर दे रिस्की? No, not for me. So that I draw a line to. That I say no to because that is not a food. So I will never say no to any food. But this is not a food. It's created, right? I would much rather you have a little bit of sugar because that's something your body understands and knows how to process. And you also know, I've had meetha, so I must cut down in the next meal. The mind also works like that. When you think that you're adding an artificial sweetener, you think that you're cutting down on calories. That's all you're cutting down on. आपने 20 कैलोरी हटा दिया, एक चम्मच में 20 कैलोरी तो है, बट आप जो खा रहे हो उसमें तो हो सकता है 1000 कैलोरी हो. अब तो खैर they've been studied also. So research also is very clear about, the long-term effects might not be that great. Some researchers have come up about memory, And another problem people don't understand is you've tricked yourself into thinking that आपने मीठा नहीं खाया. But when it goes inside the body will all consider that as sweet only, right? So the insulin will still be secreted. So the pancreas will still overwork. So how is it helping you? Only thing you're going to get is a little bit of guilt assuaging thing कि मैंने मीठा नहीं खाया and दूसरा आपने 20 कैलोरी बचा लिया. So grains की बात कर रहे हैं, मैदे पे आते हैं. What are your opinions on मैदा? So once in a while देखो अब केक तो मैदे से ही बनेगा, ठीक है? So once in a बना लो आमंड फ्लोर्स. मैंने भी बहुत ट्राई करा, बहुत महंगा बनता है. No point, ठीक है, आपने कभी कभी ट्राई कर लिया for excitement and for जब एक वो हेल्थ वाला फेज आता है तो once कुछ चीज़ों के लिए मैदा रखो, बट जो मेन स्टे है आपका रोटेशन में मैदा यूज कर लो ना, क्या हर्ज है? फिर उसकी बारी हफ्ते में एक बारी आएगी, then there's no problem, right? So whenever you cook a carbohydrate, the simplest rules, that is why it's best not to try and outguess everything. Follow rules. Like I said, one rule is grain rotation. Usko follow karo. Second rule for using carbs and grains is follow a rule of 50-50. So when you're making anything with carbs, whether it is roti, whether it is rice, whether it is upma, whether it is poha, whether it is noodles, whether it is pasta, 50% should be vegetables. So 50 grain, 50 vegetables, अपने आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स और लोड नीचे आ जाएगा और अपने आप फाइबर बढ़ जाएगा. तो उसमें आप अगर मैदा का भी बना रहे हो, it's fine. घी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? Absolute superfood. Okay. Very good for our gut lining. It helps repair it. जो हम रोज जंक खा के या रोज पोल्यूशन वाला एयर ब्रीथ करके या स्ट्रेस करके अपनी गट लाइनिंग रोज खराब करते हैं, उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है. 80% of the problems today are because of a bad gut. Whether it is lifestyle, whether it is PCOS, whether it is your weight gain, whether it is your skin issues and inflammatory issues, autoimmune conditions, lifestyle diseases, 80% of them begin with a bad gut. So today, if I get anybody tested, we are 3 of us sitting here, if we get tested, 2 of us will have a bad gut. It's that bad. Maybe 2.5 of us will have a bad gut. The ratio is that bad. So ghee ka basic purpose hai, it helps repair the gut. It keeps the gut lining healthy. It keeps our digestive system working better. Chronic constipation of people has been solved just by including 1 teaspoon of ghee. Kuch aur karne ki zarurat nahi padti hai. No need to add. I mean, I'm not saying no need to add. There might be cases who need medical intervention and things like that. But before you do any other intervention, I tell everyone, do these 3-4 things that I tell everyone for constipation. 1, add 1 teaspoon of ghee to either a cup of warm water first thing in the morning
and have it. Or if you can't stomach it first thing in the morning, some clients tell me, then at night, at bedtime, you do like a small cup of milk with haldi, black pepper, and a little bit of ghee. That's one thing. The second thing you can add is a few prunes in your diet. If the constipation is very bad, then, sorry, I'm going away from ghee, but since we were talking about constipation, because it works very well. So just have, if it's very bad, do 2 prunes after every meal. Okay. And then otherwise, as a prevention or maintenance thing, maybe just 3 prunes a day. That really helps. Because a lot of times it's the gut mobility which is the problem, and their ghee really helps. And prunes add soluble fiber, so which helps add bulk. So, ऐसे कौन से basic signs होते हैं जो आपकी body में indicate करते हैं कि there is some nutrition imbalance in your body? Very important. You know, because if you're attuned to your body and you catch these signs right in the beginning, you can take care of them. You can take care of almost everything through food. That is so important for people to know. You can't let the disease progress and then expect that food will sort it out for you. So the very simple signs that you need to look out for is, I'll tell you what happens is, whatever is the weakest part of your body will start showing signs first, right? So this is what happens when you, for example, if your gut is bad, then you'll start getting indigestion and you'll start getting heartburn, you know, stuff like that. Fatigue is the commonest sign that comes in most people, you know, because that can be because of any number of reasons. That could be because of deficiency, that could be because आप carbs ज़्यादा खा रहे हो और protein कम खा रहे हो तो वो spikes हो रहे हैं, right? So look out for fatigue. Look out for any weird things happening on your skin, you know, because with the gut, the skin also gets impacted very fast. Look out for sudden weight gain, sudden weight loss. That is another very important sign of our body telling us something is very wrong. And one that is very often missed out is brain fog. Yeah, you suddenly start feeling that you're not able to take decisions. You're not able to fathom, you know, as quickly as you used to. It's not aging, you know. It is probably, maybe you're just not having carbs, you know. Yeah. Maybe the protein is not reaching your brain. Yeah. Oh God, yes. Yeah, I never realized. I thought कि maybe कुछ हो रहा है, कुछ चल रहा है, some hormonal imbalance. Yeah, or stress. Yeah. Sometimes it's as simple as changing your diet. You just get the macros in place and you just add a few extra nutrients individualized basis what a person's requirement is. And within 2 weeks, that person is new, literally. Weight is, people focus on weight too much. I think हम मजाक में कहते हैं ना, good food makes people happy, but it's actually very true. Science says that, yeah. It's very clear. You eat, there are good food, there's a list of good foods which actually boost serotonin in your brain. There is a list of foods that can help you sleep better. You don't need a sleeping pill. You just need to add those foods in your dinner. I give khichdi to people who can't sleep. Khichdi for helps. Dinner. Khichdi helps. Khichdi helps you sleep. It's a combination of carbs and protein, which is easily digestible, right? And it's giving you complete protein because this combination gives you complete protein. It's easy to digest. It's something that gives us comfort because, you know, in our mind, we are wired that khichdi helps give, it's a comfort food. Yeah. So this combination can help you sleep better. As long as you do the 3-hour rule, eat it 3 hours before your sleep. There are people who've not slept well for a while and then I give them khichdi and then they start sleeping well and then they're like, we never thought, we were told not to eat carbs for dinner. Yeah. You know, so it's different for everyone. It's different for what your requirement is. So what are like 5 foods? I'm very curious. I'm just going to add this question. What are like 5 foods that will make you happy if you add them in your diet? Yeah. One is this. Khichdi. Yeah. So because this is a perfect combination, you know, it really works for most people. Second, which really works well is walnuts. Okay. Walnuts actually have melatonin in them, which help you sleep better. You want sleep foods or you want good foods? Happy good foods. health, happy health foods. Happy Okay. health. So second is walnuts. Third is anjeer. Anjeer. Anjeer, not many people know, is an
absolute superstar. It's my favorite food. It's something that I introduce and insist that everyone, whether they like the taste or not, include in their diet, because the benefits are just way too many. It gives you calcium, it gives you iron, it has compounds that make you happy. Then chickpeas. Oh. Chickpeas is a wonderful food which makes you happy. Turmeric. That's another benefit of haldi that not many people know. It's a good food spice, a good mood spice. It does so many other things. People talk about curcumin for inflammation and everything, and it's a prebiotic. Yeah. Yes. You know, again, that's another great thing. It's a prebiotic and it makes us happy. Okay, so let's get back to it. Okay, so what is the healthiest cooking oil? Because there are so many oils. There's avocado oil, there's this oil, soybean oil, mustard oil. What oil is the best oil for cooking? So there is no best oil. Sorry to burst your bubble, but there's no easy answer. Every oil does different things for us, like every food does different things for us, because oil is also made from the foods, right? So whatever food you're taking it out from, you'll get the benefit of that. So you're taking it out from olive oil, you get the benefit of olives. Taking out of sunflower, you will get the benefit of that. So again, with oil, I have rules that I would teach everyone. If you follow those rules, you'll do fine. First, try and do cold pressed. Oh, yeah. Because the most important thing, whichever oil you might be using, that comes later. The first rule is do cold pressed. Little more expensive, but then I tell everyone, look at it in perspective. How much are you going to use? You know, and in any case, I don't want you to use too much. Little goes far with oil. So switch to cold pressed. You know, it moves people's budget around, but I tell them it's better to cut down that one extra pizza that you order and preferably order cold pressed. That's the first rule. The second thing with oils I tell people is use them by rotation. Never buy 5 liter, 10 liter oils unless it's a huge family. Then I understand. For nuclear families, the silliest thing you can do is to buy oil which is like old and lying there in your house and getting rancid with time passes. And also, when you keep rotating the oils, then you get the benefit of all the oils. There are 2 ways to rotate the oils. One is that you buy maybe sunflower this year, this month, and then the next month you buy another oil, olive, or the next month you buy another oil, you know, move to another one. Another way to do it is that you take 2-3 oils, you make one sabzi in one oil, you put your ghee ka tadka in dal, you make your stir fry in olive oil, you know, so there's 3 covered there, right? So आपने सब्जी अपनी सरसों के तेल में बना लिया, right? आपने दाल में तड़का घी में दे दिया, और आपने अपना स्टर फ्राई जो बनाया या सैलेड जो बनाया उसमें आपने ऑलिव ऑयल डाल दिया. इसको आप चेंज किए, 3 ऑयल आपने 2-3 महीने ऐसे यूज करा. फ्राई करना है तो शुड बी फ्राइड इन समथिंग जिसका जो जल्दी वो नहीं रैंसिड नहीं होता है ना, तो मे बी राइस ब्रैन is an option. Okay, ghee is of course the best option, but not always possible. So या कोकोनट में कर लो या फिर राइस ब्रैन में कर लो, और अगले महीने फिर चेंज कर दिया, मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ कोकोनट एंड आपका और क्या कौन से ऑयल, सेसमे रख लिया, राइट? एवोकाडो इज ऑल्सो एन ऑप्शन, बट इतना ईजिली अवेलेबल नहीं है. सो ट्राई एंड डू लाइक दैट. सो देर आर 2 ways to do it, रोटेट करना. So either you keep changing your oils every month, or you do every day sabzis में, ये इसमें बना लिया, वो उसमें बना लिया. So that's the other thing to do. And refined oils, last rule but important, completely avoid. बहुत inflammatory हैं. Once in a while कर लिया, that is fine. We also do it once in a while, but try and keep it to as low as possible. Now, I think we can move on to myth versus fact segment. Yeah. So it's a very small rapid fire segment. You have to just tell, is it a myth or a fact? Okay. So we're going to start with the first question. सबसे पहला क्वेश्चन और कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि कार्ब से फैट बढ़ते हैं. एक्स्ट्रा कार्ब खाओगे तो फैट, वैसे इट्स अ मिथ, बट टू मच खाओगे तो ऑब्वियसली वो फैट में कन्वर्ट होकर डिपॉजिट हो जाएगा. सो इट्स नॉट दैट कि सिर्फ फैट खाने से फैट बढ़ता है. कुछ भी एक्स्ट्रा खाओगे, प्रोटीन भी एक्स्ट्रा खाओगे, तो वो जो इतने सारे प्रोटीन पाउडर खाते जाते हैं, अगर बॉडी
आपको नहीं रिक्वायरमेंट है, आप उतना बर्न नहीं कर रहे हो, तो वो भी फैट में कन्वर्ट होकर डिपॉजिट हो जाएगा। इन बिटवीन फूड पानी पीना गलत है? इन बिटवीन फूड मतलब खाना खाते 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 खाना आप पानी पी लेते हो? गलत कुछ नहीं है, बट इट्स बेटर टू नॉट हैव टू मच वाटर। I'm not militant about it कि बिल्कुल नहीं पीना. There are people who are militant about it कि 1 घंटे बाद पीना नहीं, because I don't think it's that big a deal, okay? But it's important कि आप थोड़ा पानी पियो अगर if you're really used to it, and if you can keep a half an hour's gap, fine. But I'm not saying kill yourself over it. वेजिटेरियन डाइट्स में इनफ प्रोटीन नहीं होता? Prima facie ऐसे ही देखेंगे तो नहीं होता, but because वो complete प्रोटीन नहीं होता, और क्योंकि उसमें कम होता है तो आपको ज़्यादा खाना पड़ता है टू गेट इनफ प्रोटीन, राइट? तो वहाँ थोड़े से चैलेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा खाओगे तो कैलोरीज बढ़ जाते हैं, राइट? एंड अनदर प्रॉब्लम इज वेजिटेरियन की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की वेजिटेरियन की डेफिनेशन होती है आलू की सब्जी एंड रोटी, यू नो, इन 2 meals a day काइंड ऑफ अ थिंग। तो वो तो वेजिटेरियन नहीं है, उसमें वेजीज कहाँ हैं, यू नो? सो वहाँ प्रॉब्लम आता है। तो आप ग्रेनिटेरियन हो कि वेजिटेरियन हो, पहली बात तो ये है। तो आप वेजिटेरियन डाइट में खा सकते हो इनफ प्रोटीन, अगर आप उसको ठीक से प्लान करोगे। कॉम्बिनेशंस आर इंपॉर्टेंट, लाइक आई सेड, दाल चावल का कॉम्बिनेशन गिव्स यू कंप्लीट प्रोटीन। सिमिलरली चिकपी हमस के साथ अगर आप सार्डो ब्रेड खा रहे हो तो इट गिव्स यू कंप्लीट प्रोटीन। तो थोड़ा काम करना पड़ता है, बट हो जाता है, पर करना पड़ता है काम, बिकॉज नॉन वेजिटेरियंस के लिए ईजियर है, आई एक्सेप्ट इट। सो आई एम अ proponent of 60-40 और 70-30 कि 70% वेज खाओ और 30% नॉन वेज खाओ। ओके, नेक्स्ट, स्पाइसी फूड से अल्सर्स होते हैं। अगर आपकी गट बहुत खराब है तो स्पाइसेस क्रिएट करेंगे ट्रबल, और कैन अगेन दे विल नॉट कॉज अल्सर्स, ट्यूमर्स नहीं बनाएंगे, बट वो क्या होएगा कि वो इरिटेट करेंगे लाइनिंग को, तो चांसेस हैं कि जो ऑलरेडी वहाँ पे कुछ शुरू हो रहा है वो बढ़ जाएगा। बट ऐसे नहीं है कि कोई वो नहीं है कि स्पाइसी फूड खाने से अल्सर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। रात में 8 बजे के बाद खाना खाना इज बैड फॉर योर हेल्थ? नहीं, ऐसा नहीं है। से 8 बजे का कैसे आया रूल, क्योंकि हम कहते हैं ना 12 बजे से पहले सो जाओ, तो 11 बजे बेड में तो घुसना पड़ेगा ना, तो उससे 3 घंटे पहले 8 ही हो गया। that way. Otherwise ऐसा नहीं है कि 8 बजे ही खाना है, 7 बजे खा लो। ओके, ग्रीन टी से बेली फैट कम होता है? सिर्फ ग्रीन टी से बेली फैट नहीं कम हो सकता। ग्रीन टी बहुत अच्छी है हमारे लिए, इट्स वेरी गुड फॉर अस, बिकॉज उसमें कैटेचिन्स होते हैं वगैरह विच इम्प्रूव आवर मेटाबॉलिज्म, हेल्प डिटॉक्स द बॉडी, बट यू हैव टू सोर्स राइट। अगेन आई टेल एवरीवन, कुछ भी करना है पहले सोर्स राइट, स्टडी अबाउट द सोर्स ऑफ द फूड। इफ़ यू गेट गुड ग्रीन टी, वो आपको काम डाउन भी कर सकती है, मेटाबॉलिज्म भी आपका बूस्ट कर सकती है, इन्फ्लेमेशन भी काट सकती है, बट अकेला आपका फैट लॉस, बेली फैट नहीं लूज करा सकती। अगर आप हाई कैलोरी डाइट खा रहे हो, बर्गर के बाद ग्रीन टी पियोगे तो आपका फैट लॉस हो जाएगा? नहीं होएगा ना। ओके, लास्ट वन, वेट लॉस फूड एंड डाइट फूड्स आर एक्चुअली बैड? वेट लॉस फूड्स एंड डाइट फूड्स, हाँ, बिकॉज डिपेंड करता है ना कि आपने क्या बना दिया उसको। जैसे ग्लूटेन फ्री भी बोल देते हैं, पर उसके अंदर क्या क्या डाल दिया है आपने। ठीक है, शुगर फ्री बना दिया उसको, बट उसमें कार्ब्स तो उतने ही हैं किसी और फॉर्म में, और 10 टाइप के एडिटिव्स हैं, कलरिंग एजेंट्स हैं, जो कि आपकी बॉडी में जाके इन्फ्लेमेशन बढ़ाएंगे और आपका इंसुलिन रिसेप्टर्स को खराब करेंगे, तो वेट तो बढ़ेगा कम होने की जगह। जो डाइट नमकीन्स होते हैं, सीड ऑयल में बने होते हैं, राइट? तो व्हाट इज द पॉइंट? मैं आपसे बहुत शॉर्ट में पूछना चाहूंगी, कोई टॉप 5 एडवाइसेस जो आप देना चाहेंगे टू समवन हु इज ऑन अ वेट लॉस जर्नी, एंड व्हाट इज वन मिस्टेक दैट एवरीवन मेक्स? सो एडवाइस सिंपल है कि ट्राई नॉट टू फोकस टू मच ऑन वेट। सिर्फ वेइंग स्केल को मत लेके चलो। सबसे इंपॉर्टेंट मैं ये कहती हूँ कि वेट तो अपने आप नीचे जाएगा। Do not be obsessed with your weight, because every time you stand on the scale, you know, whether it moves or not, एक को stress add होता है, and most people are not able to lose weight because of the tension or the stress that they add to their life. They go on a diet and they start getting stressed. तो ये obsession मत रखो weight के लिए। weight is important, कम करना है, but सिर्फ एक वही important चीज़ नहीं है। You don't walk around with numbers here. I mean, I tell everyone, right? So look at how your body is responding. इंच लॉस हो रहा है, फैट कंटेंट कम हो रहा है, वेट बट वो आपका इंच वो हो रहा है, तो वो इट्स फाइन, यू नो, ये मेजरमेंट्स कम जा रहे हैं तो इट्स फाइन। सेकेंड एडवाइस इज डू नॉट फॉलो अ फैट डाइट। यू गेट वन बॉडी, आई टेल एवरीवन, प्लीज गिव इट द रिस्पेक्ट। उसी के ऊपर क्यों एक्सपेरिमेंट कर रहे हो? यू नो, पीपल एक्सपेरिमेंट ऑन माइस फर्स्ट,
Why do you, a new fat diet has come in the market, किसी ने आपको बताई, आप अपने ऊपर फटाफट डाल देते हो without thinking कि आपकी body पे इसका क्या असर होगा. Please do not do fat diets. Fat diets simple हैं. Anytime a diet is promising you quick results, anytime a diet is telling you that remove this thing from your food, it's a fat diet. Okay. And the same fat diets come in different names, so do not do a fat diet. That's the second advice. Third advice, which I tell everyone, is कि change your macros, focus on the nutrition. जब आप nutrition पे focus करोगे, the calories take care of themselves. Instead of obsessing over the calories, focus on nutrition, I tell everyone. Fourth is related. Instead of removing foods from your diet, कि आप ये मत खाओ, add foods. I'll give you a simple explanation or example. शाम को अगर या 11 बजे कोई अगर रोज चिप्स खाता है या नमकीन खाता है बिकॉज उसको भूख लग रही होती है उस वक्त अगर एप्पल विथ हमस ऐड कर दिया जाए, बिकॉज सिर्फ एप्पल ऐड करने से फ़ायदा नहीं होगा, इंपॉर्टेंट, बिकॉज सॉल्टी की उस वक्त उसको क्रेविंग है, तो एप्पल विथ हमस ऐड कर दिया जाए. 11 बजे भूख लगती है तो 10:30 बजे वो लिया जाए. सो दैट इज़ अ बेटर स्ट्रैटेजी कंपेयर टू टेलिंग समवन कि आपने नमकीन और चिप्स 11 बजे नहीं खाना है. So when you start adding good foods, it crowds out the bad food अपने आप. So that strategy works better than trying to remove foods is what I'm saying. And the last important thing I tell people is, if you're comfortable at your weight and you do not have a health issue, in spite of being a dietitian, I'm telling, do not focus on that. Focus on your health. Focus on how you can build health. जितना energy आप weight loss पे लगा रहे हो, उतना एनर्जी अगर आप अपनी इन्फ्लेमेशन कट करने में, इम्यूनिटी बढ़ाने में और एनर्जी लेवल्स बढ़ाने में, डेफिशिएंसीज हटाने में और डिसीजेस को दूर रखने में लगाओगे, वेट तो अपने आप कम हो जाएगा. जब भी हम कोई डाइट पे जाते हैं या खाने के बाद हमें बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती है, स्पेशली मीठा. हाँ. सो व्हाट आर सम हेल्दी मीठा ऑप्शंस, हेल्दी डिजर्ट ऑप्शंस? पहली बात, क्रेविंग्स होती हैं अगर आपकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी होती है. दो तरह के क्रेविंग्स होते हैं. एक या तो डेफिशिएंसी है, योर बॉडी इज क्रीमिंग फॉर समथिंग, a particular mineral or a vitamin is really low. Very often B12 is very low अगर मीठा की क्रेविंग हो रहा होता है. Calcium is very low. Another salt, अगर salt की क्रेविंग हो रही होती है तो पहली तो वो important चीज़ होती है, आप फिगर आउट करो. दूसरी होती है habit. There are two types of cravings. You're not hungry, but your body is used to having something at that time. Okay? So दोनों को अलग तरीके से हैंडल किया जाता है. अगर physiological craving है, your body is screaming for something, so then you have to make sure that वो deficiency को solve out करे. That's a long drawn process, but very easily done. Okay? And दूसरा अगर वो मन, और दूसरा उसका solution होता है कि you include good मीठा foods in your diet consciously. जैसे कि आप wrong नहीं खाओगे. आप 2 बर्फी नहीं खा लोगे अगर आपने maybe 2 dates खा लिए. You know, so obviously a date is a better option compared to बर्फी. Okay. And also कहते हैं it's very easier for men to lose weight than women. Yeah. That's one thing. Is it true? And if it's true, why? How? Yeah, it's very sad. It is very unfortunate. We've been given the wrong end of the deal. I agree with you. Exactly. Yeah, because you know our bodies are made different. Yeah. So their muscle mass is higher, because of which their metabolism is higher. Okay. So they lose weight faster. And also their requirement of calories, they're bigger sized. The requirement of calories is higher. So if someone requires 2500 calorie a day, उसमें से अगर आप 1000 कैलोरी हटा के उनको 1500 पे कैलोरी पे ले आओगे तो बड़ा सा डेफिसिट क्रिएट कर सकते हो. But women, we have higher fat. Okay. And उसमें हम हार्मोन्स का कॉकटेल डाल दें, women hormones का, so it becomes a recipe for disaster. But even beyond that, अगर उसकी हमारी women requirements because of our size and everything is maybe say 1800 calories maximum, तो उसमें हम कितना 500 कैलोरी का डेफिसिट क्रिएट करेंगे ना, उससे नीचे तो नहीं जाएंगे, स्टारवेशन पे तो नहीं जाएंगे. तो ऑब्वियसली हाफ हो गया रेट वेट लॉस का. बट हैविंग सेड दैट, consistency is important. Weight loss is not a 1 week, 1 month or even 3 month game. Weight loss is something that you need to do consistently. Most women clients I have, I mean, when it gets very dicey when I get couples. So
Men lose weight like that, and women are like, it's inching down, and then they get very frustrated. Exactly. Stuff like that. But eventually, over the period of time, women make up. That much I can promise you. So you make up, and then you reach where you need to. So then you become equals. Talking about women and weight, Deepika Padukone just had a baby. Yeah, And, everybody knows, the whole world knows. Yeah. So, and congratulations to her. so during her whole pregnancy period, she was going out doing shoots, and that happens with a lot of actresses. कि वो जो एक weight मुझे खुद में दिखे या किसी और में दिखे, वो उतना नहीं दिखता है. And even after Alia Bhatt also. Yeah, even after they deliver, they quickly bounce back. तो ये magical secret क्या है? Magical secret कोई नहीं है. See, it's not just actresses alone. I know so many women. I was working till my 8th month, till my doctor said, now we need to take you to the hospital. So a lot of women I know are working right till the end, and that's the secret I'm telling you. You have to keep working. Unless it's a complicated pregnancy, you keep working, you keep going out, you keep your mind fresh. So, and there is more movement, you do fine. Because, there is this big mistake, I'll tell you. People think we need to eat for 2, which is wrong. You don't need to eat for 2. You just need to increase 300 calories every day. And I know women who increase 1500 calories every day. So you need to gain between 10 to 12 or max 13, 14 kilos during your pregnancy. Above, the upper cap is 15 kgs. उससे ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है weight gain की. When you gain too much, it becomes difficult to lose weight. So it's important during pregnancy to not focus on calories, but to focus on nutrients. And I find it very sad that people don't focus on the important nutrients, which are important for child's brain development, and also bone development and all that. And they keep focusing only on calories. वो करना ज़रूरी है. Keep a cap of 12 kgs. उससे ज़्यादा gain नहीं करना है. If you only gain that much, losing weight will be faster. So that's one rule that everyone must follow. Focus on nutrients. I have a lot of, thankfully, only lately, पहले नहीं था, clients who come to me for pregnancy diets. So this is a very interesting phenomena. Women now have realized that जो बाद में weight loss करना है उसका process अभी से शुरू करना है. And also for the help of their, for the sake of their children's health. और बाद में जो lose करते हैं ये quickly, which do not go by that, guys, because every body is different. Everybody is, see, I'm not going to take names, but some actresses haven't lost weight so fast after pregnancy also. Because every body is different, you have to understand. So आपकी जो body जिस rate से weight lose कर रही है, उस rate से उसको करने दीजिए. Do not try to copy any celebrity in that. Because that is not going to work, I'm telling you. And also, their bread and butter depends on it. Yours doesn't. So what do you think about that Ozempic, and would you recommend it to somebody looking for losing weight? Personally, I am not even in favor of food in packets. So forget about a medicine. Okay, so for me, weight loss medication is worse than trying to do a fat diet. Okay, so because my thinking is that if you need to lose weight, you need to change your habits. So when you take a medication, you do not change your habits. So you might lose weight because obviously the drug works is what we can see. But if you don't change your habits, you will gain back more, which is what happens with fat diets also. So the same thing will happen with medication. So for say maybe a year or two, do you want to take that risk? That, for a year you want to look thinner? Do you want to take that risk is what I would like to ask everybody. That is one. Second, how Ozempic works is that it works on your hormone GLP-1 in the body. There is a particular hormone and it boosts it. जब आप Ozempic खाते हो तो GLP-1 ज़्यादा बनता है आपकी बॉडी में. तो जब GLP-1 ज़्यादा बनता है तो वो हार्मोन वैसे नेचुरली भी बनता है ना, बट ये बढ़ा देता है. तो क्या करता है GLP-1? आपका एपेटाइट सप्रेस करता है, आपका फूड स्लोली रिलीज होता है गट से, तो इतनी जल्दी वो नहीं बढ़ते, और इंसुलिन का रिलीज ज़्यादा करता है, तो जो शुगर आप खाते हो वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है, राइट? ये GLP-1 का काम है जो कि Ozempic उसको बढ़ा देता है. So which is why people quickly lose weight, right?
These are 3 simple principles कि आपको अपना इंसुलिन स्पाइक कम करना है और आपको ऐसा खाना खाना है जो कि स्लो रिलीज होए, राइट, और ऐसा खाना खाना है जो आपकी एपेटाइट को कम करे और क्रेविंग्स काटे. तो ये तो तीनों चीज़ें कैन बी डन वेरी इजीली विद डाइट, विद द राइट डाइट. विद इन 2 weeks people come back and say that our cravings have gone. What have you added in our diet? Because this can be very easily done and any good nutritionist can do it for you, right? जितना टाइम ओजेम्पिक लेगी उससे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, बट आपके हैबिट्स भी चेंज हो जाएंगे और आपका वेट भी कम हो जाएगा और वो वेट वापस भी नहीं आएगा और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, क्योंकि फूड्स का साइड इफेक्ट नहीं होता, मेडिसिन का वी ऑल नो. अभी पता हो या नहीं हो पर होता है इवेंचुअली, हर मेडिसिन का होता है. Ozempic is for people who are in very serious condition. They have to go for a surgery. तो मे बी bariatric की जगह वो Ozempic लेके अपना surgery कराएं. Leave it for them is what I usually. And then there are certain foods also, by the way, जो GLP को mimic करते हैं in our diet. Okay, turmeric actually leads to boost of GLP-1 in the body. Okay. तो अगर मैं Ozempic की जगह आपको बोलूँ कि आप 1 कप दूध लें, उसमें थोड़ा सा हल्दी डालें और थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालें और हल्का सा घी डालें, तो आपके सारे प्रिंसिपल्स इसके जो Ozempic के हैं वो मिमिक हो जाएंगे. आपको गुड फैट मिल गया जो कि आपको बल्क देता है और GI को स्लो करता है, आपको इंसुलिन स्पाइक को रोक देगा और जो कर्क्यूमिन है उसमें वो आपका GLP-1 को बढ़ा देगा. टेस्टी भी होता है. अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक डिसीजेस की, तो डायबिटीज़ या PCOS जैसे कंडीशन में हम कैसे अपनी डाइट को मैनेज कर सकते हैं और कौन से फूड्स स्पेसिफिकली PCOS में हमें अवॉइड करने चाहिए? Both are related because both are insulin resistant problems. PCOS जो है उसमें आपके मेल हार्मोन एंड्रोजन थोड़ा ज़्यादा बनता है और डायबिटीज़ में इंसुलिन रिसेप्टर्स ख़राब हो जाते हैं. सो दोनों की डाइट इन वे सिमिलर है और अगर हम PCOS को कंट्रोल नहीं करेंगे तो इट प्रोग्रेसेस ऑन टू डायबिटीज. दैट इज द गिवन. पहले प्री डायबिटीज एंड देन डायबिटीज. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट. सो एंड PCOS इज एन एपिडेमिक टुडे. Young girls, 13, 14, it's starting and there are lots of reasons for it. Food तो है ही गलत, वो तो it's a given, it's wrong. How they eating, the timings, they are very wrong. It's very important to change all that. PCOS is a lifestyle disease. तो सिर्फ खाना चेंज करने से कुछ नहीं होने वाला. It has to be a holistic approach. And wonderful results have been found. With just changing. You can't cure these things. Yes. You can only reverse them, stop them, maintain them. This is another thing people need to understand. All these diseases, but maintaining them and reversing them is almost as good as curing because you are almost able to put a brake on them. बहुत स्लो कर सकते हैं उसका वो प्रोग्रेशन, राइट. सो आपकी लाइफस्टाइल, कंप्लीट लाइफस्टाइल चेंज चाहिए दोनों में, PCOS में भी एंड डायबिटीज में. सो आई टॉक अबाउट बोथ एंड देन आई टेल यू लिटिल डिफरेंस इन बोथ. योर food needs a complete overhaul. I will talk about that. Your sleep cycle has to be right. No more sleeping at 3 and waking up at 12. That is the biggest culprit because your hormones change. The young girls who are listening to me and even the boys who are listening to me, trust me, you have to be fast asleep before 12. If you want to make just one change in your life, just do this. Because अगर आप ये नहीं करोगे तो आप कुछ भी कर लोगे, आपको ये प्रॉब्लम्स होनी ही होनी है हार्मोनल इश्यूज़ की. अगर ये नहीं होगा तो ADHD हो जाएगा, कुछ तो होगा. हार्मोन्स 12 बजे चेंज हो जाते हैं, तो अगर आप सोए हुए नहीं हो उससे पहले तो दे विल गो हेवायर. एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि ओनली देन द इंसुलिन रिसेप्टर्स वर्क इन द बॉडी. और जो फूड्स हैं PCOS के लिए और डायबिटीज़ के लिए सिमिलर हैं. जो इंसुलिन स्पाइक कम करते हैं वो हमको खाने हैं. ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिनका लो होता है वो खाने हैं. और ग्लाइसेमिक इंडेक्स से भी ज़्यादा एक ग्लाइसेमिक लोड चीज़ होती है, उस पर फोकस करें. थोड़ा पढ़ लें होमवर्क, ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड का डिफरेंस पढ़ लें, बहुत इंपॉर्टेंट है. और कभी भी कार्बोहाइड्रेट अकेला नहीं खाएं. आप रोटी खा रहे हैं और सब्जी खा रहे हैं, दैट इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर लाइफ, कि उसमें प्रोटीन नहीं है साथ में. ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड. आप समोसा और चाय ले रहे हैं, दोनों कार्ब्स हैं और चाय है, प्रोटीन नहीं है. जब भी कार्बोहाइड्रेट खाएंगे आपने उसके साथ प्रोटीन खाना है.
आप फ्रूट खा रहे हैं तो भी आपको साथ में नट्स खाने हैं। ओके। कोई भी कार्बोहाइड्रेट अगर आप खाएंगे उसके साथ में आपने प्रोटीन ऐड करना है। सिंपल हैक और रूल फॉर बोथ डायबिटीज एज वेल एज फॉर PCOS, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। प्रोसेस फूड नहीं खाना है। जो भी फूड इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है बॉडी में वो नहीं खाना है, 0। एंड समटाइम्स पीपल से कि आपको हफ्ते में एक दिन फास्ट रखना चाहिए। सो व्हाट इज द राइट वे टू इंट्रोड्यूस फास्टिंग और डिटॉक्सिंग, दे से, राइट, इन योर बॉडी, इन योर डेली लाइफस्टाइल बेसिकली? अब आजकल तो फैंसी नेम है ना, इंटरमिटेंट फास्टिंग। Yeah, we were gonna talk about that also. बट जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ फास्टिंग था उसको उन्होंने क्या करा था, रिलीजन के साथ अटैच कर दिया था। इफ यू बिलीव इन हनुमान जी, आप ट्यूसडे को फास्ट कर लो। आप साईं बाबा पे बिलीव करते हो तो आप थर्सडे को फास्ट कर लो। एंड आई थिंक माँ पे बिलीव करते हो तो भी थर्सडे, व्हाटएवर। नवरात्रों में भी पीपल डू दैट, राइट? उसका तो बहुत ही ब्रिलियंट फंडा है। नवरात्रा इज अ ब्रिलियंट मास्टर स्ट्रोक, आई विल टेल यू व्हाई। हाँ, बिकॉज फास्टिंग का क्या होता है, आपने जब रिलीजियस उसके साथ उसको ऐड कर दिया तो हर बंदा हफ्ते में एक बार तो कर ही लेगा। एक भगवान को तो खुश करना ही है ना, राइट? ठीक है, तो उसका क्या फायदा है? आपने अपने डाइजेशन को ब्रेक दे दिया, आपने हेल्दी चीज़ें खाई, थिंग्स दैट आर गुड फॉर यू खाया, खूब पानी पिया, ब्रेक दिया। एक मील खाते हैं कोई फास्ट में कुछ चीज़ें खाते हैं, कुछ चीज़ें नहीं खाते। ग्लूटेन, मोस्ट फास्ट डू नॉट अलाउ ग्लूटेन, यू नो, वीट नहीं अलाउ करते हैं। तो दीज आर डिफरेंट परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ हेल्पिंग योर बॉडी डिटॉक्स वंस अ वीक। मेंटेनेंस एक तरीके से, कि पूरा हफ्ता आपने जो भी करा, एक दिन आपने अपनी बॉडी को दिया जिसमें वो रिपेयर और रिजुविनेट और कर सके अपने आप को। ठीक है, तो ये फास्टिंग का सिंपल फंडा है, which makes a lot of sense as long as it is done in the traditional way. So once a week is a great idea, but do it the right way, not आजकल का feast वाले fast, फिर तो purpose ही beat हो गया ना। So what is the right way of right way is eating digestible food, जो कि आपकी बॉडी easily digest कर सकती है। सिंपल रूल है। तो उसमें ग्लूटेन अवॉइड कर लें। कुछ लोग डेयरी भी अवॉइड करते हैं, which is fine, you know, and ज़्यादा fruits and vegetables and raw foods. So this is another thing that if a person can include in their diet, कि 30% of their food every day, if it can be raw, half your problems can be solved. Okay. Consciously, fruits and vegetables raw अगर आप खाएं, I mean I'm not saying grain raw खाओ, but fruits and vegetables, हाँ, salads खाओ या फिर fruits खाओ। 30%, 20% से शुरू कर लो, but it's important. I actually wanted to understand कि नवरात्रि का फास्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हमारी बॉडी के लिए? Exactly. नवरात्रि कब आता है? साल में 2 बार ही आता है। Yeah. एंड दोनों टाइम कस्प पे आता है सीजन चेंज के, एंड दैट इज व्हेन आवर इम्यूनिटी इज द लोएस्ट। Okay. Oh. That is the simple funda behind it. They were brilliant. They were genius, the people who actually made all this. And then they made it gluten-free. They make us eat gluten-free grains at that point of time, right? Lots of vegetables which are easy to digest. Okay, 7 days. So that's like your bi-yearly, twice yearly repair of the body. और दिन भर ना कई लोग हैं, जैसे अब तो कई लोग सिर्फ दिन भर साबूदाना खाते हैं, या आलू खा लिया, तो उसको मतलब उसके अलावा आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं? ओरिजिनल नवरात्रि का फास्ट का मतलब ये होता था कि आप एक बार ही ग्रेन खा रहे हो, चाहे आप कुट्टू का आटा खा रहे हो, बिकॉज वो भी ग्लूटेन फ्री होता है, चाहे आप साबूदाना खा रहे हो, राइट? और बाकी दोनों वक्त आप फ्रूट्स खा रहे थे। ओके। ओरिजिनली तो यही होता है ना, और या फ्रूट्स खा रहे थे या मखाना खा रहे थे, विच इज ऑल्सो a brilliant nut for us. It's foxnut is very good. It's a seed actually, but it's called foxnut. So originally तो ये होता था कि फास्ट, तो मैं वही कह रही हूँ, अगर फास्ट करना है तो पुराने तरीके से फास्ट करना है, आज अपने हिसाब से कन्वीनियंस से फास्ट नहीं करना है। आजकल बाहर जाके आप वो पूरे थाली खाते हो नवरात्रा की, तो फिर तो वो फास्ट नहीं हुआ ना, फिर वो तो यू आर एक्चुअली लोडिंग योर बॉडी मोर। It's made with seed oil, you know, which is causing inflammation. Or the whole idea of Navratri fast or any fast is to cut down inflammation in the body. Toxins hatana, badhana nahi. Okay, so we have a fun segment now. It's rate these things according to health benefits. Good, bad, or okay. Yeah. Okay? Let's start. Brown bread. Brown bread, most of it is bad. Whatever you're getting in the market is bad. Okay, brown rice. I'm more in favor of eating white rice
And so I'll give you not a longish answer for this. And trying to eat more indigenous rices. Instead of brown rice, do red rice, black rice, indigenous rices. Almond milk. Brown rice is more difficult to digest. Okay. Okay. Almond milk. The market one, bad. You can make it at home, great. Okay. Quinoa. Good. Packaged fruit juices. Very, very bad. They're not fruit juices. Yeah. Okay. Oats. Good. Instant noodles. Very, very bad. Greek yogurt. Very good. Jaggery. Good. Avocado. Very good. Millets. Good. Again, not too much of millets, please. Because होता ये है कि millet का शोर है तो सब millet के पीछे भागने लगते हैं. फिर we will do the same mistake with millet जो कि हमने wheat के साथ करी है. Too much of it will again cause, it's not easy to digest. So maybe like Rotation, twice a week, thrice a week. Let's talk about the building block of our body. Okay, we'll quickly go dive into the protein powders. Okay. Okay, protein powders हमारे लिए सही हैं या नहीं है? Because there was a lot of debate अभी कुछ time पहले there was a report that came out, that all of them have chemicals and metals which are actually not good for your body. So basic two questions हैं कि do you actually need protein powders and क्या एक vegetarian diet में enough protein होता है? So again, no straightforward answer. It's very individualized. But looking at the scenario today, I am a huge fan of making sure that we meet our protein intake with foods. And it is doable. It is very much doable, even with a vegetarian diet. But it takes a lot of work and a person has to be willing to do that, right? So if you're able to meet it, great, because we need at least 1 gram of protein per kg body weight for everyone. Per kg body. 1 gram per kg. So, और उतना नहीं खाते हैं लोग, right? So protein deficiency is the worst thing you can do to your body. So first look at overhauling your diet. If you can manage to overhaul your diet, very good. और अगर नहीं हो पा रहा, तो adding a protein source for some time because it's a supplement. You have to understand it's a supplement is a supplement. It cannot be your mainstay. Okay? So then you can include some protein powder in your diet. But it's the same story as dairy. You have to source very, very carefully. Because किसको trust करोगे, किसको नहीं करोगे, they are expensive, right? So you be careful on what you're sourcing. It's very important. We've heard young people nowadays are getting heart attack. Young adults, heart attack or cardiac arrest. So what are some tips that you would like to give for a healthy heart? So healthy heart, see, hearts are packing up because of inflammation. Okay. So bad diet is very often a cause. A whole lot of time, exercise is not the problem. A lot of people are still exercising, but they're not eating the right food which can support their exercise. वहाँ भी problem होती है. If you're exercising too much but not eating the right nutrients, your heart will not function well, right? And sometimes people just follow fad diets and they do very intensive exercises. That is also a problem. I tell people that if you're exercising, your diet has to be just tailored to it. Very, very important. और दूसरा common reason, चलो ये तो एक segment हो गया जो exercise करते हैं. There are people who are not moving at all and then they're eating a whole lot of wrong foods and then there is a lot of stress. So it's like an assault from every angle. So सबसे पहले heart pack up करता है ना, So it's very important to change your lifestyle, which is why piecemeal नहीं करना चाहिए इसको पूरा holistically अपनी पूरा audit करा के where are you going wrong? Sleep is a problem, stress is a problem, diet is a problem, exercise is a problem, pollution is a problem, transit is a problem. You're traveling for like 2 hours one way to work. I mean, I can't say job chhod do, but we can find ways to maybe relax you when you're traveling, So it has to be like a complete holistic change. But this is a huge problem. These heart attacks are और पकड़े भी नहीं जा रहे हैं. Exactly. Testing is important. Even more now than compared to earlier. Alcohol consumption एक healthy diet का part बन सकता है क्या किसी भी way में? How much do you need to drink to, if you cannot avoid it? So कितना आप balance करो, क्या पियो, जिससे आपकी lifestyle भी healthy रहे और उतना ज़्यादा दिक्कत भी ना हो? Stay a social drinker. Only drink in social situations. Never sit alone at home and drink. That is the first rule I tell everyone. Never
मेक इट अ हैबिट दैट यू रीच बैक होम, सो मुझे डिस्ट्रेस करने के लिए एक लेना है या 2, एक का 2 और 5 कब हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा. So if you really want to enjoy it, keep it for social situations. आजकल सब people go out, you know, once a week तो जाते ही जाते हैं या once in 2 weeks जाते हैं. So strictly keep it to that. And there, do not exceed more than 2 or 3 drinks. Try not to, okay? That is, these are ideal circumstances. You don't have to like ban it completely, but keep these 2 rules in mind. And third, when you're having alcohol, enjoy the alcohol. Do not add anything to it. The restaurant people are going to hate me, but do not have cocktails. Whatever you're having, just have it with water or just plain soda. Do not try to add any extra calories, any extra juices. It's not required. So if you don't like the taste of alcohol, don't have it. If you're trying to, you know, change the taste by adding things, there's no hard and fast rule that you have to have whiskey when you do hate the taste of it and you need to add a lot of additives to it, you know, or taste changes to it. So this is the third thing. And other thing is, keep a lookout on how your body is handling alcohol. Everybody's body handles it very differently. There are some people who are able to handle it, some people whose body gives reactions very fast. So your body is not able to digest it. So try and keep it minimal. And any alcohol is fine, whatever gives you satisfaction. ओके अगर हमें बैलेंस डाइट रखना है सो क्या हमें ये मल्टीविटामिन्स जैसे सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है? सो नहीं, मल्टीविटामिन्स नहीं, बिकॉज उसका नॉर्मली कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि थोड़ा सब कुछ लेने से बेटर है कि आपकी बॉडी में जो डेफिशिएंसी है आप उसको टैकल करो. अगर B12 की डेफिशिएंसी है तो एक मल्टीविटामिन लेने से का कोई फ़ायदा नहीं है ना. देन यू डू अ B12 सप्लीमेंट. ओके, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, यू डू अ विटामिन डी सप्लीमेंट. आयरन की है, कैल्शियम की है, फोलेट की है, मैग्नीशियम, जिसकी भी डेफिशिएंसी है, डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स दैट यू गाइस आर गेटिंग, डू दैट सप्लीमेंटेशन फॉर सम टाइम. It's a stopgap arrangement. It's not a lifelong thing that you started on a supplement and you keep having all your life. और supplement का भी तभी फायदा होगा और protein का भी तभी फायदा होगा if your gut is optimum. Otherwise you'll keep popping them and it'll keep going out of your poop with your poop. कुछ भी absorb नहीं होएगा. So you're wasting money. So first work on your gut. Okay. I think that brings us to the last segment, which is called Does It Really Work? Okay. So we have a few things और हम उनका नाम लेंगे. आपको बताना है कि ये एक्चुअली काम करती हैं या नहीं, या सिर्फ ऐसे ही शोशा है. Okay. So we start with Nimisha. Yeah. Apple cider vinegar. This is fun. Very true. This is fun. No, this is fun. It works for some people, but I haven't seen much benefits personally in my clients. Yeah, I feel Nimbu works better. Okay. Detox diets. Detox की definition सही होनी चाहिए ना. Like fasting diet is a detox diet. So if you're doing that, I'm happy with that. But if you're trying to do like a juice fast, I'm not happy with that. No carbs diet. Doesn't work. The worst thing you can do to your body. Gluten-free diets. No, not required. Cut down gluten, yes, definitely, which I do in 100% of my clients. Cut it down to size. But removing it, unless you're gluten intolerant, proven gluten intolerant with the test, or sensitive, gluten sensitive, then removing it is required. If you're not, then a little bit of gluten is fine. Superfoods like chia seeds? Helps. Because these are all functional foods, not just chia seeds, sabja seeds. A whole lot of these foods are very, very potent superfoods, which give a lot of nutrition with less. So including a few superfoods in everyone's diet is important. What are like 5 superfoods on the top of your head that everyone should include in their diet? So I think one very underrated food is sweet potato, shakarkandi, lot of vitamin A, which is missing in a lot of people's diet, as more than kale. So kale is a superfood and so expensive, but so I feel including some shakarkandi in your diet is a very good idea. Amla. Okay. Half an amla gives you your daily requirement of vitamin C. So amla in any form. When it is in season, maybe amla shot, amla juice. When it is not in season, maybe you can keep some, you know, murabba ready or make a chutney ready or something. It will help you with probiotics also, and it will give you that. It will take care of your sweet cravings also. That is why I love chutneys, because अगर आप थाली में चटनी खा लोगे ना, आपको sweet craving होएगा ही नहीं बाद में. मीठी चटनी अगर आप खा लोगे साथ में.
Then the third would be avocado for me, because हमारी Indian diets are great otherwise, but a huge gap of good fat in our diet, because fish नहीं खाते ना हम लोग. So we need good fat in our diets. So including half an avocado is a great idea. If not avocado, because not everyone can source it, coconut. Oh. Fresh coconut, very good source of fat. So that is another thing that I would add. Then nuts, most definitely nuts, every single day. Try to do at least 3 kinds of nuts every day. So morning में बादाम तो सब खाते ही हैं, नहीं खाते हैं तो वापस शुरू कर दें. But उसके अलावा maybe by rotation, because like pistachio is a complete protein nut. Not all nuts are complete protein, but pistachio gives you complete protein. So that's one very good option. At least थोड़ा सा भी रोज खाओगे आप तो प्रोटीन आप add on करोगे अपनी डाइट में. Then you have cashews. Cashews and walnuts at bedtime will help you sleep better. Both of them help you sleep better at bedtime. Then you have newer nuts now, you know, because we eat too much of omega-6 क्योंकि हम seed oil बहुत ज़्यादा खाते हैं ना, तो omega-6 बहुत ज़्यादा खाते हैं. So if you include nuts like macadamia nuts, जिसका omega-3 और omega-6 का ratio बहुत अच्छा है. So that is a great way of cutting it off. So nuts can fill a lot of gaps for your in your diet, and it's an easy way to do it. So 3 nuts ka rule every day, which you can keep rotating. Try to have all. And then dried fruits like maybe say blueberries, cranberries, और अगर वो नहीं तो even जैसे ये falsa and things like that, जो भी आप कर सको source, ये सब source करो. But otherwise every food is a superfood. In my Fix It with Food books there are 50 superfoods, और उसमें even aloo is included, gobi is included, because every food is good for us. We just need to know how to eat it. Eggs are a superfood. Yeah. So if you're an eggetarian, half your problem is solved. With the yolk. With the yolk. Yolk is a superfood. Oh. Okay, All right, so continue. Pre-workout drinks. Pre-workout drinks. These mixes that you get online, pre-workout mixes. I'm not a huge fan of buying these off-the-shelf pre-workout things. If you want to have something, you make something at home. Sattu is a brilliant pre-workout drink, as well as a post-workout drink. The idea is to eat protein, right? Performance enhancers की हमको 98% of लोगों को ज़रूरत नहीं है. Unless you're in the gym 2 hours in the morning and 2 hours in the evening. That is a different story altogether. That is a different segment we are not catering to today. So personally, I would much rather you focus on your diet, and instead of just doing a pre-workout, post-workout, focus on your entire diet. Yeah. Okay. Plant-based diets. Very good, and we are going back to them. Yeah. So I personally feel कि 60, like what I mentioned, 60-40 रखो या 70-30 रख लोगे तो great. Last one, fat burners and these carb cutter capsules. You already know my answer. They don't work, yeah. I mean, they do work, but then I don't know what they do, what else they do in your body, you know. So I would not experiment with my body. So I would not want you to experiment with your body. Trust me, you will not get another body. One mess up you create in your body is there with you for life. So losing 5 kilos, is it worth cutting off 10 years from your life? Is a simple question that I ask everyone. I think good nutrition is something that is very deep down inside our Indian heritage. वो दादी नानी से पास होता हुआ आ रहा है. And good health, good skin, good hair is something जो है सदियों से है, बस हम उसको भूलते जा रहे हैं, and which is something that we need to go back to. So I had a lot of fun. I learned a lot. Now I'm going to have my apple and hummus. I won't have apple essay. If you don't have hummus healthy, keep seeds handy or nuts handy, because then you can quickly have with that. Yeah. I think I had a lot of fun, and there was a lot of things that I learned, and I hope that everyone else watching this will also learn a lot of things from this episode. Thank you, Kavita. Thank you for being here. Most welcome. All right. Okay, you guys know the drill. You have to like, you have to share, and you have to subscribe to Jist News for more such videos. And do follow us on Instagram, Facebook, X, and LinkedIn. The links are in the description.